Let's start with exercise 4.2 quadratic equations. The first question is finding the roots by factorization method. There are two methods. In some questions factorization is also possible. Otherwise using quadratic formula is definitely possible in every question. But here it is mentioned that using factorization, so you have to use factorization. So let us perform splitting the middle term. We have to make factors of 10 such that when we subtract, we get 3. So clearly 5 and 2 are the factors. Let us decide the sign. This gives me minus 5 plus 2. Then only I can get minus 3. So I break it. X square minus 5x plus 2x minus 10 is equal to 0. From these two I take x common. I am left with x minus 5. There is a separate video on splitting the middle term. You can watch if you want. Now again, if these two are same, that means you are on the right track. If these two are different, so there must be some mistake. Again x minus 5 common and we are left with x plus 2 is equal to 0. Now here product of two things is 0. See, a into b is 0. So that means one of them must be 0 or both of them are 0. दोनों में से एक भी 0 नहीं हो तो product 0 नहीं हो सकता. So that is why we apply this step. Either x minus 5 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. So this gives me x is equal to 5 and this gives me x is equal to minus 2. So these are the two roots of this equation. In the second part, we multiply 6 and 2 and I get the product of a and c as 12. We know that this is a, this is b and this is c. So we have to split 12 such that their difference is 1. So clearly factors are 4 and 3 and since we want plus 1 here, I will write plus 4 minus 3. थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसीलिए इलैबोरेट कर रही हूँ ताकि आपको स्प्लिटिंग में भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो आपको समझ में आ जाए. दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड वेयर इन यू वॉन्ट हैव अ प्रॉब्लम. टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू. 2 और 4 में से 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन. सो वी आर लेफ्ट विद x प्लस 2 और इन दोनों में से माइनस जो साइन यहाँ पे है वही साइन हम यहाँ कॉपी करेंगे वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव. 3 कॉमन एंड आई एम अगेन लेफ्ट with x plus 2. And since these two are same, that means I am on the right track. Again x plus 2 common. I am left with 2x from here with sign minus 3 from here. Again either x plus 2 is equal to 0 or 2x minus 3 is equal to 0. This gives me minus 2 and this gives me 3 by 2. So these are the two zeros or the two roots which we have found using factorization method. Factorization can be done in any way, either using identity, splitting the middle term or whatever demand is there of the question. Let us see the third part. It's quite important because it is using square roots. So let us see the value of a is root 2, b is 7 and c is 5 root 2. So first we shall calculate AC. Root 2 multiply by 5 root 2. What do I get? 5 and root 2 into root 2 is 2, that is 10. Now factors of 10 which on addition, because this is positive, gives us 7. So clearly they are 5 and 2 and no problem here. Even this question is a little simpler because root sign is not there in the middle. If the root sign is in the middle, then it becomes even more complicated. You should practice such questions from extra books. Now this becomes very simple. Root 2x square. 7x को हम स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में, 5x एंड 2x एंड 5 रूट 2. अब यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे, इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है. ये रूट 2 है, ये 5 है, नथिंग इज कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ओनली आई विल टेक कॉमन. एक्स स्क्वायर और x में से आई टेक x कॉमन. अब यहाँ से मेरे पास क्या बचा? यहाँ से मेरे पास बचा रूट 2 और x प्लस साइन एज इट इज़. यहाँ से बच गया 5 क्योंकि x बाहर चला गया. अब जो साइन यहाँ पर है उसे एज इट इज़ आप कॉपी कर लेंगे. 2 और 5 रूट 2 में से आपको लग रहा होगा कुछ कॉमन नहीं है, बट इट्स नॉट सो. 1 2 कंटेन्स 2 रूट 2s. ओके, सी रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 बिकम्स 2. तो एक 2 के अंदर 2 रूट 2 होते हैं तो एक रूट 2 हम कॉमन ले लेंगे. x भी कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ से मेरे पास 2 2 में से एक रूट 2 बाहर चला गया, एक रूट 2 अंदर रह गया. ये प्लस एज इट इज और बचा 5.
So since this is same, that means we are on the right track. Again I take root 2x plus 5 common. From here I am left with 1x. You may write only x, and from here I am left with plus root 2 is equal to 0. So you can even multiply them back and check whether your this factorization is correct or not. Again we shall perform either or step. Either root 2x plus 5 is equal to 0 or x plus root 2 is equal to 0, which gives me x as minus 5 by root 2 and minus root 2. I hope you understand it. You may or may not even rationalize this to obtain the proper answer, minus 5 by 2 root 2 and minus root 2. So these are the two roots, and you may leave it here only, it is okay. Now in fourth part, we have 2x square minus x plus 1 by 8 is equal to 0. Now c is in a fraction. So it's better to first remove the denominator, and you can take the LCM throughout in a single step. So if I multiply whole of the equation by 8, I get 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0. Now you can do this in a single step, no need to explain it. Now it becomes simple splitting the middle term, or if you see carefully, you can also use the identity. I will tell you both the methods. So for splitting the middle term, AC is 16. So the factors will be 4 and 4. Minus 4, we apply the sign because I want minus 8. So I get 16x square minus 4x plus 1 is equal to 0. Taking 4x common from here, I am left with 4x minus 1. This minus 1 as it is. From here I am left with 4x, plus minus is minus 1. So again, since this is same, we are on the right track. 4x minus 1 and 4x minus 1 is equal to 0. Again we apply either or. So either 4x minus 1 is equal to 0, or you see, since these are identical roots, don't think that you have to write it only once. You have to write it twice, okay? So this gives you 4x is equal to 1 and x is equal to 1 by 4, and solve this also, I get x is equal to 1 by 4. So 1 by 4 and 1 by 4 are the two roots. Don't write just 1 by 4. You have to write it twice, okay? You have to write that these are the two roots, 1 by 4 and 1 by 4. Now the second method to this is using identity. If you see carefully, this is 4x whole square, this is 1 whole square, and I can write this as 2 into 4x into 1. So this gives me a square minus 2ab plus b square, और ये किसका फॉर्मूला होता है, a minus b whole square का. Hence I get 4x minus 1 whole square is equal to 0, or 4x minus 1 into 4x minus 1 is equal to 0. And further it is the same, either 4x minus 1 is 0 or 4x minus 1 is 0. So I hope you understand. So in whichever question you can apply identity, you can use identity. Otherwise splitting will be applicable to all these squared questions, if possible, rational or irrational roots. So in whichever questions identities are possible, splitting will definitely be possible. So it's up to you, you can use any method. Now here is the fifth part. 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0. Let's directly apply the identity here. It gives me 10x square plus 1 square and minus 2 into 10x into 1. So just check it once. Is this 20x minus 20x? Yes. So identity definitely saves our time, and it is easier than splitting the middle term. So again here we have identical roots. Either 10x minus 1 is equal to 0 or 10x minus 1 is equal to 0. So this gives you x is equal to 1 by 10 and x is equal to 1 by 10. So 1 by 10 and 1 by 10 are the two roots. So I hope you understand this question very well. You can get this question for 2 marks, or maybe if it is easier, then you may get as 1 marker depending upon the pattern of the paper. Now question number 2 says solve. Solve means we have to find the value of x, and since it is quadratic, we shall have two values. Now in this, digits are a little complicated than those in question number 1, but method will be same. Clearly identity is not going to be used. Here a is 1, b is minus 45 and c is 324.
So you can also use quadratic formula once you learn it, but well, this exercise is based on factorization, so I shall be solving right now with the help of factorization only. So product of A and C is 324. Now B is minus 45, but the product is positive. So I want such factors of 324 which on addition gives 45. So the factors will be 36 and 9. You can also use this prime factorization of 324 to obtain the factors such that which on addition gives me 45. Okay. So now let us decide the sign of 36 and 9. Since I want minus 45, it will be minus 36 minus 9. Okay. Now rest the work is easy. Minus 36x minus 9x plus 324 is equal to 0. From these two I have x common. Minus 9 as it is, now x is not common, x plus minus 36. Now since this is same, we are on the right track. X minus 36 into x minus 9 is equal to 0. Either x minus 36 is equal to 0. Students, do not forget to write this is equal to 0. This is very important. Usually students forget. Like in chapter 2, it was based on polynomials. So here you will lose marks if you don't write equal to 0. So we have two values of x, that is 36 and 9. Now let us see the second part. Here AC is 750 and factors of 750 which on addition gives me 55. Right? So clearly the factors will be 30 and 25. You can again prime factorize 750 to obtain the factors. You can please go and watch the video on splitting the middle term if you are not confident about it. Splitting is a very, very important topic. Okay. So sign obviously will be minus 30 minus 25 because I want minus 55. This gives you x square minus 30x. Here I am not explaining splitting in complete detail because we have already done it and video is already quite long, but I don't want to compromise on the NCERT. Here this minus as it is common and I am left with 25. Here is x plus minus is minus, 30 is equal to 0. Now this is same, so I am on the right track. नहीं तो लगता है कि गलती हो गई. You can check out your mistake. X minus 30 is equal to 0 or x minus 25 is equal to 0. So this gives me x is equal to 30 and 25. I hope you are done with it. Questions 3 to 6 are word problems. I will again tell you word problems are the most important part of this chapter. You will definitely get 1 or 2 in the exam. So we have to find two numbers whose sum is 27. So clearly we shall let first number is x. And when you can do it in one variable, you should always do in one variable only because you know that quadratic equations are going to be in one variable. हाँ, अगर आपको दिक्कत आए तो आप 2 वेरिएबल्स में लेट कर सकते हो, बाद में इट विल बी कन्वर्टेड टू 1 वेरिएबल. लेकिन यहाँ 1 वेरिएबल का काम आसान है तो हम 1 वेरिएबल में ही लेंगे. लेट फर्स्ट नंबर इज x, सो सेकेंड नंबर विल बी क्लियरली 27 माइनस x क्योंकि दोनों का सम 27 है. And according to question, the second situation that is given to us is that the product is 182. So x multiplied by 27 minus x is equal to 182. This is the most important part. Right? Further what is left is just calculation which we have already done. So this gives me 27x minus x square is equal to 182. Bring everything on to left hand side. 27x minus x square minus 182 is equal to 0. अब यहाँ पर हम दो काम करेंगे. पहला काम हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और दूसरा काम हम एक्स स्क्वायर को हमें पॉजिटिव भी बनाना है. ओके, सो वी शैल डू दीज टू वर्क्स. तो पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सिर्फ एक स्टेप में मैं एक ही काम कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. एंड नाउ आई विल रिमूव दिस नेगेटिव साइन. उसके लिए मैं क्या करूँगी, पूरी इक्वेशन को बेसिकली वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय -1. So we shall be left with x square minus 27x plus 182 is equal to 0. यहाँ तक अगर आपका करेक्ट हो गया means you are done with the word problem. Rest is only the calculation part जो हमने अभी ऊपर इतने सारे questions किए. We shall split the middle term. So 14 and 13 will be the factors. So x square minus 14x minus 13x plus 182 is equal to 0. यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x minus 14 और 13 कॉमन ले लेंगे तो x plus minus is minus 14. So either x minus 14 into x minus 13 are the two factors.
Again we shall apply either or. So either x is equal to 14, like let me write completely so that you don't get confused. So either or वाला step हम यहाँ पर कर लेंगे, either or. So x is equal to 14 and x is equal to 13. Now usually one of the answers will get rejected in quadratic, but here in this question none of the answers is getting rejected, because if first number is 14, then what is the second number? 27 minus 14, which is 13, and both of their product is also 182. So this also satisfies the answer. And if the first number is 13, then second number will be 27 minus 13, that is 14, and again their product is 182. So this is a check. Product is 14 into 13, that is 182. So our answer is the two numbers are 14 and 13. आप जिसको मर्जी पहले मान लो और जिसको मर्जी बाद में मान लो, ठीक है. So this is the complete answer to this question. Let's go to question number 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. So we shall let the first positive integer as x. Then obviously consecutive word का क्या मतलब है? एक साथ. Okay, one after the other. So second positive integer will clearly be x plus 1. And what is the second situation? So according to question, sum of whose squares means x का square plus x plus 1 का square, इन दोनों के squares का sum is given to be 365. So this is our equation. यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो वेरी फाइन, बिकॉज आगे हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. तो ऑन सिंप्लीफिकेशन आई विल क्विकली डू इट. एक्स स्क्वायर प्लस हियर आई विल अप्लाई द आइडेंटिटी, प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365, एंड आई गेट 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड ब्रिंग 365 टू लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 364 इज इक्वल टू 0. और ये स्टेप आप ध्यान से देखिए, क्योंकि 2 तीनों में कॉमन है तो मैं थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर सकती हूँ. इसके लिए मुझे कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेट वे राइट वो एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस बिकम्स योर क्वेश्चन ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट. द फैक्टर्स आर अगेन in third question also it was 14 and 13, here also it is the same. So x square plus 14x minus 13x, क्योंकि तभी हमें प्लस 1 मिलेगा ना, minus 182 is equal to 0, and on solving I x plus 14 into x minus 13 is equal to 0. Now again when we apply either or, so either x is equal to minus 14 or x is equal to 13. You can write x plus 14 is equal to 0. You can write that step also. Now here this will be rejected. x is equal to minus 14 is rejected. Why? क्योंकि हमने x को पॉजिटिव इंटीजर लेट किया था, जबकि ये नेगेटिव आ गया. पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था. सो हमारा आंसर सिर्फ x इज इक्वल टू 13 रह जाएगा. बट आपका आंसर कभी आपने x पे नहीं छोड़ना है, यहाँ तक फिर मार्क्स कट जाएंगे. x को क्या माना था? x को हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर माना था. सो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर इज 13, एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या है? इसके कंसेक्यूटिव यानी कि नेक्स्ट 14. सी इस 14 का इस 14 से कोई लिंक नहीं है, ये अलग वैल्यू थी जो कि रिजेक्ट हो चुकी है. ये 14 इस 13 का कंसेक्यूटिव इंटीजर है. सो आवर आंसर्स आर 13 एंड 14. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस. देयर इज अ राइट ट्राइंगल और हमें इसके ऑल्टीट्यूड का रिलेशन बेस के साथ दिया हुआ है. तो अगर मैं बेस को x मान लेती हूँ तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? 7 लेस देन द बेस. सो उसको 7 माइनस एक्स नहीं करना, x माइनस 7, इट इज 7 लेस देन द बेस. एंड हाइपोटेन्यूज इज 13. सो हाइपोटेन्यूज इज डायरेक्टली गिवन टू अस 13. सो वी शैल लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. डोंट फॉरगेट टू लेट इट अलॉन्ग विद द यूनिट. सो ऑल्टीट्यूड विल बी x minus 7 centimeter. See students, even these things carry marks, okay? And hypotenuse is already given to be 13 centimeter. So according to question, अब देखिए क्वेश्चन में हमें कुछ और नहीं दिया हुआ, बट ये हमारा नॉलेज ऑफ राइट ट्राइंगल हमें बताता है कि हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर. वी नो दैट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस perpendicular square.
Now we are just going to solve it out and I get x square plus, use identity, a square plus b square minus 2ab, that is minus 14x is equal to 169. And solving it I get 2x square minus 14x, और ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और 49 169 में से जब हम माइनस करेंगे माइनस 120 इज इक्वल टू 0. नाउ अगेन वी शैल बी डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट. आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. परफॉर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताती हूँ. 60 के फैक्टर्स हमारे पास हो गए जिनको हमें माइनस करके 7 चाहिए, वो हमारे पास हो गए 12 एंड 5. अब साइन डिसाइड कीजिए, माइनस 12 प्लस 5, तो दोनों के आगे x लगा दीजिए. x माइनस 12 x प्लस 5 आंसर आएगा हमारा. आप इसे चेक कर सकते हो, एक स्टेप मैंने खा लिया यहाँ पे. सो इधर x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5. दिस विल बी रिजेक्टेड. सो x इज इक्वल टू 12 इज द आंसर. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया कि हमें बेस कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से हमारा ऑल्टीट्यूड हमारे पास है x माइनस 7, दैट इज 12 माइनस 7 विच इज 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. आपको फाइनल मार्क्स इसके मिलने वाले हैं अलॉन्ग विद द यूनिट माइंडेड प्लेस. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन. Now the last question says here, a cottage industry produces certain number of pottery articles in a day, and it was observed on a particular day that cost of production of each articles was 3 more than twice the number of articles produced on that day. So clearly what are we going to let number of articles produced in a day इज इक्वल टू x. अब हमको कॉस्ट का रिलेशन इस x के साथ दिया हुआ है. सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी. अगर आपको ये लैंग्वेज बनानी आ गई तो बस फिर इसका मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स विल बी वेरी इजी फॉर यू. सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी, अगेन लेट अस सी, 3 more than twice the number of articles produced. Twice the number of articles produced is 2x, and 3 more than this means 2x plus 3 rupees, क्योंकि आगे उन्होंने बोला है in rupees. Okay. If the total cost of production was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए. cost of production was rupees 90. What is the meaning of cost of production? जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं और जो एक की कॉस्ट है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगी. इजंट इट? सपोज करो वी प्रोड्यूस 5 आर्टिकल्स इन अ डे और एक की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारे पास, 50 रुपीज़ हो गई. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपीज़ है, और कॉस्ट हमें कैसे मिलेगी, व्हेन वी मल्टीप्लाई द 2. सो x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90. आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर. इसके आगे तो वी आर लेफ्ट ओनली विद कैलकुलेशन. 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, विच गिव्स यू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. लेट अस मेक द फैक्टर्स. AC will be minus 180, 2 into 90, 2 into minus 90. So minus 180 यानी कि 180 के फैक्टर्स जिन्हें माइनस करके 3 आए, राइट. सो द फैक्टर्स विल बी 15 and 12. एंड सिंस आई वॉन्ट प्लस 3, सो बड़े के साथ पॉजिटिव, छोटे के साथ नेगेटिव. थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जिनको स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम हो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. नाउ इन दोनों में से 2 और 15 में से नथिंग इज कॉमन, ओनली x इज कॉमन. सो आई एम लेफ्ट विथ 2x प्लस 15, और यहाँ से 12 और 90 में से 12 इज नॉट कॉमन, 6 इज कॉमन. सो आई विल टेक 6 कॉमन एंड आई विल बी लेफ्ट विथ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. अगेन दिस इज सेम, सो आई एम ऑन द राइट path. 2x plus 15 common, x minus 6 is equal to 0. Either, since this is the last question of NCERT 4.2, I am doing it completely, or x minus 6 is equal to 0. From here x is minus 15 by 2. इतना सा स्टेप आप खा सकते हो easily जो डाइजेस्ट हो जाए. Now clearly this will be rejected. Why? Because number of articles can't be negative. Okay, so that means x is equal to 6 is the answer. Sir, that is number of articles produced each day is 6. So cost of each article will be 2x plus 3, that is 2 into 6 plus 3, 6 2 are 12 plus 3, 15 rupees is the
cost. So these two are the answers. Number of articles produced each day is X and cost of each article is rupees 15. So I hope you've understood the topic. Do it thoroughly with me and I'm sure your NCERT will be perfect. So if you like the video, please do not forget to like, share and subscribe also. Happy practicing. Thank you so much.